Committee of the Supreme Court Bar. वैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा है इसलिए मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट बार में अंग्रेजी ही चलता है. I am very grateful. आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ. Thank you. ना सिर्फ इसलिए कि आज हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं. आपका दावत का भी शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का. और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल, ऑनर्ड, प्रिविलेज्ड, हम्बल्ड कि सुप्रीम कोर्ट बार का इस फोरम पे आपने मुझे ये दावत दिया. और शायद मैं पहले वो सियासी रहनुमा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस पे इस फोरम से खिताब कर रहा हूँ. तो ट्रूली ऑनर्ड एंड humbled. It is indeed a privilege. And we appreciate the role of the bar in upholding the law, rule of law, constitutionalism, and human rights in Pakistan. We appreciate that the bar has played this role regardless of the political inclinations of individual members of the bar and the office bearers of the Bar Association. The nation values this bipartisan struggle against dictatorship waged by the legal fraternity. This indeed raises our hopes in democracy and fighting dictatorship. We salute your courage, your determination in the relentless struggle for the rule of law in Pakistan. This is the 50th anniversary of the Constitution of Pakistan that was given to the country by my grandfather, Caretaker Shahid Zulfikar Ali Bhutto, with the invaluable support of all political parties, of the right and the left and the center. Whether of democratic and secular inclinations or religious persuasions, the unanimous constitution given by the political parties and leaders at the time also had the backing of all the federating units of our federation. This consensus is no small achievement. Let there be no doubt or mistake about it. Under the leadership of Caretaker, the political leaders of the time rose above political partisanship, a value that has since systematically eroded over the years. One opposition political leader at the time was asked as to why he had agreed to the Constitution when he opposed Zulfikar Ali Bhutto so vehemently at every turn and every forum. In reply, the political leader is reported to have said that opposition to Bhutto was a political necessity, but making the Constitution was a national necessity. Such was the spirit at the time. It looks like a dream today. On this occasion, therefore, on the occasion of the 50th anniversary, I would like to pay tribute to all 24 members of the Constitutional Committee of 1972, the Legislative Assembly of 1973, which passed the Constitution, and the then legal fraternity for achieving this milestone in our national history. They are our national heroes, and we salute them. Standing before this august gathering in the premises of the Apex Court of Pakistan, I would like to share with you my thoughts and perceptions about how we see the role played by the judiciary in defending and advancing democracy. I'm tempted to speak about it because democracy once again is under threat, and the people look up to the judiciary to protect. Opening ceremony में उन्होंने उसको अनरावल किया, अनाउंस किया, उसका तस्करा किया कि ये इम्पेटस होगा फॉर न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ. ये न सिर्फ चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बल्कि चाइना के साथ साथ ये पूरे रीजन और अक्रॉस द रीजन ग्लोब के लिए करता है. हमारे यहाँ शायद अभी तक BRI की जो एप्रिसिएशन है वो उस सतह की नहीं है जो होनी चाहिए. ये ओशंस को, ये लैंड रूट्स को, ये
एविएशन के सेक्टर में एयर कनेक्टिविटी को कुर्बत भी पैदा कर रही है और उस कुर्बत के साथ साथ जो है ना एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच के तहत लोगों को मौके फराहम कर रही है कि वो उससे on the one hand and the glue that binds the federating units on the other. Abrogating it means dismembering the federation and alienating the citizens from the state. When dictators abrogated it in the past, the judiciary upheld this abrogation, sometimes in the name of the doctrine of successful revolution, and sometimes in the name of the doctrine of necessity. One felt as if the soul of the state had been torn by those very luminaries who were supposed to protect and defend it. I would not like to dwell more on this. As they say, forget the past, arrange for the present, and face the future. Those who abrogated the Constitution and ridiculed it as merely a 15-page document, and those who upheld the abrogation not only disgraced themselves, but also heaped disgrace on the people and on our nation. They are the traitors of the nation, and their actors were nothing but treacherous. History will always remember them with this title. That is why it is important to jealously safeguard the Constitution and relentlessly pursue those who have subverted it. I've been a member of Parliament now for 5 years and have seen the role played by the judiciary from the perspective or the vantage point of Parliament. The restoration of the judiciary as a result of orchestrated public demonstrations in March 2009 is a seminal incident in the judicial history of Pakistan that had a profound impact on the judiciary-parliament relations. In the words of a leading lawyer and member of the movement for the restoration of CJP, Iftikhar Chaudhry, he later stated that the 2009 restoration as a result of public pressure had resulted in judges prone to arrogance and a bar prone to violence. We witnessed unprecedented judicial activism in the wake of its restoration in 2009. Iftikhar Chaudhry, Chief Justice Iftikhar Chaudhry, Honourable Sabiq Chief Justice, declared that not Parliament but the Constitution was supreme. And the Constitution was what the judges said it was. Not what it actually said, not what the founders said, but what he said. In the 18th Amendment in 2010, for which, once again, consensus within Parliament allowed for the passage of the 18th Amendment and the restoration of the 1973 Constitution, for which we're grateful to President Asif Ali Zardari, for which we're grateful for Senator Raza Rabbani and the entire drafting committee. The 18th Amendment in 2010 had closed the doors of judges to legitimize constitutional abrogations. It barred judges from taking oath under the PCO, and they could no longer, at least in theory, uphold the subversion of the Constitution. The scope of punishment for abrogation under Article 6 was also widened by including in it those who upheld the abrogation. It was thought that the doors for dictators had been closed, but a new kind of dictatorship emerged. Previously, the Parliament was sent home by executive order of the President that was endorsed by the judiciary. After the 18th Amendment, when that was made impossible, the judiciary started sending home prime ministers on its own. And thus, former Prime Minister Yusuf Raza Gilani was sent home for not writing a letter to the Swiss government to implicate his own president in a criminal case, even though the Constitution protected the president from prosecution as long as he was in office. The Pakistan People's Party survived this by nominating another MNA as our Prime Minister. The next government
that followed the Pakistan People's Party also met the same fate. Prime Minister Nawaz Sharif was similarly sent home. The PMLN also unfortunate, but I must mention this, that in the 2013 general elections, the judiciary under Iftikhar Chaudhry became a partisan actor with clear favorites in the election. In 2018, the judiciary once again became a partisan actor with clear favorites in the election. It is hoped that this time it will be different. That is, of course, if we have elections. My party has been demanding an election date and schedule since Parliament's term ended, to no avail. Regardless of my well-known opinion on 90 days, which may now have become a moot point, our right to have an election is absolutely indisputable. At the time of the conflict over elections in the provinces in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, my party and I made every effort, and the most sincerest effort, for political dialogue, political consensus, to resolve a constitutional, political, and democratic crisis. Our aim was to reach a consensus on election dates, not only for the province Pakhtunkhwa, not only for the province of Punjab, but also for the general election. Unfortunately, the events of May 9th stymied these efforts. And today, we find ourselves where we are. Let us be clear, ladies and gentlemen, elections delayed are elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. Given the events that we witnessed over the weekend, I trust there shall be no further delay. It is only through a free, fair, and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. When I was Foreign Minister of Pakistan, I met with a prominent foreign minister from a country where they don't have elections, they don't understand elections. And I was asked, what are these elections? Why do you need elections? And I explained that the people of Pakistan are a very emotional people. हमें अपना भड़ास निकालने के लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी। मेरा शक्ल आपको पसंद ना आए, 5 साल अगर मैंने कोई गलती की, कोई जुल्म किया, तो पाकिस्तान के अवाम के पास वो एक ही दिन है कि मुझसे हिसाब लिया जा सकता है। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है, वो कायदे अवाम का दिया हुआ बनाया हुआ आईन है। इसलिए कि इस आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जान की कुर्बानी दे दी।
इसलिए कि सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में इस आईन को बहाल करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की सियासी जद्दोजहद को, वो नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल कर दिया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। मगर हम चाहते हैं, हमारा डिजायर ये है कि इसके बजाय कि कोई और अदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। Now let me go back to the judiciary, Supreme Court bar. I expect that in interpreting the Constitution, the judiciary will expand the powers of all democratic institutions, not merely its own. We have, however, witnessed that in interpreting the Constitution in the past, the judiciary has enhanced only its own powers and undermined that of other institutions. We value the independence of the judiciary. It is a cardinal principle of a democratic society. However, I sometimes feel that the independence of the judiciary has taken far too far to mean its independence from the law and the Constitution itself. We believe in accountability of all under the same law by the same institutions. Independence of the judiciary should not mean its independence from accountability. A reference was filed by over 100 civil society representatives from all walks of life against a Chief Justice of Pakistan while he was holding office. The reference was not heard by the Supreme Judicial Council for as long as the Chief Justice held the office of Chief Justice. When he retired, the reference was returned to the petitioner as having become infructuous. This raises some serious questions about accountability, particularly because honorable judges are so fond of claiming and proclaiming their fondness for accountability, particularly when it comes to civilian political leaders. कहते हैं कि एहतसाब होना पड़ेगा। हर वज़ीर आज़म ने अपने आप को इस इदारे के सामने एहतसाब के लिए पेश किया है किसी न किसी सूरत में। तो फिर one would imagine that the honorable judges would be the first to present themselves for accountability before their own accountability institutions. Here I would like to make mention of more recent developments that have raised our hopes. Members of the bar may or may not agree with me, but the recent decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफर में। तो वैसे ही, now when we
see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary of the judges, by the judges and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference and respect of the political leader who gave us the country's first unanimous Constitution is heard without further delay, and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shaheed Zulfikar Ali Bhutto ko शहीद किया था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की उस आइन के बहाली के लिए और अपना वालिद के लिए, कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद शहीद हो गए. ना वालिद को इंसाफ मिला और अफसोस के साथ ना हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवा सके. फिर सदर ज़रदारी ने 2011 में रेफरेंस फाइल किया, इंसाफ नहीं मिल सका. 2018-19 में मैं खुद पिटिशन लेकर आया कि मुझे इस केस का पार्टी बनाया जाए और रेफरेंस फौरन जो है वो सुना जाए. आज 2023 में मैं आपके सामने हूं. अब I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed
to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, party-less elections की जिन्हें जो गवर्नमेंट IJI किसी को याद है तो वो भी गिन लें, और हाल ही में जो हमने सब कुछ देखा है. और this is what I call the old way of doing politics, the tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, हमने ये consensus देखा है और साबित कर दिया है. जब ये हम consensus सियासत करते हैं, consensus जमहूरियत करते हैं, तो फिर हम कामयाबी भी हासिल करते हैं. हमने उस consensus democracy को 1973 में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में देखा था कि सरजमीन बेआइन को आपने आइन दिलवाया. हमने इस कंसेंसस डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 18वीं तरमीम की बहाली में पहले NFC अवार्ड 7th NFC अवार्ड की सूरत में, एंड इवन नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबले करने में की सूरत में हमने ये कंसेंसस डेमोक्रेसी को छोटे छोटे विंडोज के लिए, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हमने एक्सपीरियंस भी किया है. एंड इट इज इन दिस वेरी spirit of consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, इस consensus को हमें कायम करना पड़ेगा. ना सिर्फ within institutions, but between institutions also. ये consensus हमें पैदा करना पड़ेगा पार्लियामान और जुडिशरी के दरमियान और बाकी के अदारों के दरमियान भी. हमें और यही कंसेंसस हमने कायम करने की कोशिश की. यही कंसेंसस ही सोच था जिसकी वजह से हमने PDM के साथ दिया, जिसकी वजह से हमें वजीर बना कि हमने तो सारे जो पुराने बुराइयां थे उनको दुरुस्त करने थे. सिलेक्टेड राज को खत्म करके हमने तो जमहूरियत को बहाल करना था. सारे सियासी जमातें मिलके हमने तो वोट को इज्जत भी दिलवाना था, पार्लियामान की इज्जत को भी दिलवाना था, आइन के मुताबिक चलना था, सारी गैर जमहूरी ताकतों को दिखाना था कि कैसे जमहूरी हुकूमतें कायम करते हैं, कैसे कंसेंसस के साथ मिलके पुराने मुखालिफ साथ मिलके भी जो है जमहूरियत की तरक्की के लिए, आइन की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए साथ मिलके काम भी कर सकते हैं. अगर इस एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे पता चला है कि दैट फ्रेज, एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि the road to hell is paved with the best intentions, तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है. हमने तो पार्लियामान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था. रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे. वाह जी वाह. Anyway, मैं मायूस नहीं हूं, काफी कुछ सीखा हूं, मगर मायूस नहीं हूं. And on the 50th Golden Jubilee
یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں that our democracy is stronger today than it was yesterday. But اتنا ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا پاکستان کے آنے والے نسلوں that their tomorrow will be better than our today. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. جیسے میں نے کہا تھا, within parliament, within society, within judiciary, within the bar. یہ hyper-partisanship, hyper-polarization, اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرنے نہیں چاہتے, شکل دیکھنا نہیں چاہتے. اس سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. اگر we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan. And there'd be no better way than to celebrate our golden jubilee, than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. آپ سب کا بہت شکریہ. کیا وہ اللیگل ہیں؟ وہ اللیگل نہیں ہیں. وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں, ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے, ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے. ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانس کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں, اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں, اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں, اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں, ہماری طرف آئیں. ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے. یہ جو ارریگولر انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو. اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے, ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے, ہماری بھی نالائکی ہے, اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے. یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی. یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں, کب وہ جائیں گے, کہاں جائیں گے, اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں. یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے, جلدی نہ آئے, کیوں اتنا ٹائم لگ گیا, کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے. یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے, لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے. آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ نہیں سر, ایسی ہے. اوکے. اویس کیانی سر, اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر. ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ نہیں سر, ایسی ہے. اوکے. اویس کیانی سر, اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر. تھینک یو. جی جناب. سر 2 مختصر سے سوالات ہیں. ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سوال کرے تو مہربانی ہو. سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا, میں سمجھا تم رمچی کا پوچھ رہے ہو. چلو کوئی نہیں, مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں, ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے, دن کے حساب سے, سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں.
لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے۔ دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا، میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر، اور اللہ اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ الینا شبری پیچھے جائیں گے۔ Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد، اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریگارڈنگ the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they are thick and deep with regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بائیو میٹرکس ہوئے تھے، اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا، آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈنگ اے لیول پلینگ فیلڈ، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF ہے، پاکستان تحریک انصاف، جن کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے گزشتہ روز بھی کنونشن کی اجازت دی گئی، لیکن آلدو اس کے باوجود بھی 50 کے قریب ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھینک یو۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا آپ جو ہے نا آل ویدر لنکیجز جو خنجراب، اور چونکہ آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے گلگت کا، میں جانتا ہوں آپ شگر سے ہیں نا، you would be very much interested in that, but it seems کہ آپ کی پرائرٹی اس طرف اتنی نہیں ہے۔ وہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا، ویسے ہی میں بتاتا چلوں، اس کا تو جواب دوں گا کہ strategically the entire Xinjiang along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. بہرحال آپ کو بائیو میٹرکس کے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں، کیونکہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے اہمیت، بائیو میٹرکس والا بھی اہم ہے۔ جی میرا نہیں میری چھوٹی وہ عرض میری سن لیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے چائنیز وزٹ پہ یہ بلایا ہوا، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا اختیار ہے۔ دیکھیے، لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو، جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتہ ہے، ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بائیو میٹرکس نادرا میں اگر آپ جائیں تو کیا PM آفس کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے کہ جی علینا شگری کے بائیو میٹرکس ہونے چاہیے؟ یہ بائیو میٹرکس آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز اے رائٹ انشرائن کراتا ہے بائی دا ورچو آف یور برتھ۔ اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہے، جو کہ میرے خیال میں ہے، تو ان کے بائیو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے، اور یہاں پہ نادرا کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ جناب فوراً پہنچ کے ان کے بائیو میٹرکس لے لیں۔ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن سٹیزن آف دس کنٹری۔ کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسیس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے، کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے، تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سوچتا۔ ایک نارمل ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے؟ وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا، ساؤتھ جنوب ایسے، یاد ہے؟ نہیں، مجھے کو بھولا ہوا ہے نا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یاد ہے؟ اور پھر وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا؟ میں پولیٹیکل باتیں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، میں ایوائڈ کرنا۔ ہمارا کام دیکھیں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو اسسٹ کرنا ہے۔ جرنلی
कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों until and unless it is the judicial conclusion। अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है। ये माजी में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी होगा until and unless पार्लियामेंट आने वाली रिफॉर्म कर दे और कहे कि जनाब जिस तरह वो बाकी ममालिक में भी तहरीकें चल रही है कि जुडिशरी जो भी फैसले करे उसकी जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वो पार्लियामेंट को कर दे। हमें क्या एतराज़ है? वो डेलिब्रेट कर लें, वो सोचे कि जनाब ये जो जुडिशल फैसला है दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त। ये वो क्वेश्चंस है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चलने। अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद में सीटें मिल जाएगी और वो हुकूमत साजी करेगी। अपने मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को फोकस अपने अपने बयानिए पे करना चाहिए। वो इस मुल्क में क्या करना चाहते हैं, कैसी हुकूमत लाना चाहते हैं, महाशी पॉलिसियाँ क्या होंगी, सिक्योरिटी की पॉलिसियाँ क्या होंगी, बाकी जो जुड़े हुए इदारती इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं उनके हवाले से उनका क्या व्यू होगा। अगर ये बहस इसके इर्द गिर्द तमाम इलेक्शन का हो तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा। अब कोई कहे कि मैं पार्लियामेंट को आग भी लगाऊंगा और जमहूरियत का चैम्पियन भी बनूंगा, मैं वज़ीर आज़म हाउस में असॉल्ट करूंगा, राइट्स करूंगा, लेकिन साथ में जमहूरियत का चैम्पियन भी बनूंगा, ऐसे इन्वायरमेंट में सोशल ऑर्डर कायम नहीं रहता। इसको पीसफुल प्रोटेस्ट से जो जोड़ रहा है जोड़ता रहे, कानून नहीं जोड़ता इसको। कानून की नज़र में एक बड़ी क्लैरिटी है। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वेस्टमिनिस्टर में चलते हैं, लंदन में टोनी ब्लेयर कह गया हूँ, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को आग लगाते हैं और फिर वहीं आग लगाने के अटेम्प्ट के बाद कहते हैं कि अब हमें राइट दिया जाए विदाउट बी फेसिंग द लॉ, और चूंकि ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मैंने आग लगा दी। मैं देखता हूँ कि उस आग लगाने के जो अमल है उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। अब उसको अगर कोई ये समझ रहा है कि हम उस कंटिन्यूएशन में अब निगरान हुकूमत आ गई है तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं कर देते, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, लोगों को आग लगाने की जो लाइसेंस है वो फराहम कर दें, ये तो नहीं हो सकता। अब इस अमल में एक्स जमात मुलव्विस है, वाई जमात मुलव्विस है, यही हरकतें अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने की होती, आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के करें कि क्या यही पर्सपेक्टिव लोगों का होता जो किसी एक मखसूस जमात के साथ है। इन सब ने इनको मौलवी भी करार दे देना था, इस्लाम को रेडिकलाइज किस्म का दीन भी करार दे देना था, और इन सब पे बम्बारमेंट करने का डिमांड भी दे देनी थी कि F-16 इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी जानिब आप एक ऐसी जमात जो कि निस्बतन लिबरल है उसको उसी अमल की इजाज़त, या लेट से ये पीपल्स पार्टी ने की होती, या लेट से ये PMLN ने की होती, ये किसी और ऐसी जमात मेन स्ट्रीम ने की होती। देखिए ये नहीं हो सकता कि अगर वो अमल जो है उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं समझते। क्यों कानून का निफाज करना, कानून की पासदारी करना, हम तमाम लोग ये सुनते आ रहे हैं रूल ऑफ लॉ, isn't it the rule of law कि they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures, there would be a need and requirement to improve those procedures। हम तो रो ये रहे कि वो अपना वक्त अगर इन चीज़ों में ज़ाया न करते और ये तमाम प्रोसीजर्स क्या कुछ रिफॉर्म किया होता तो आज उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते। और इवन आने वाले पार्लियामेंट को भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ वो समझते हैं
ज़रूर उन चीज़ों को इम्प्रूव करें जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बने, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ आए, जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो एज अ सिविलियन आप समझते हैं कि आपके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते, तो करें ना, किसने रोका है? रिफॉर्म करें। सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन में मेरा और आप जैसा बंदा फंस जाए, अगर मेरा और आपका कोई प्लॉट का खुदा न ख्वास्ता झगड़ा आया, तो मेरे बच्चे और आपके बच्चे भी उससे जानबर नहीं हो सकते। ये फैसला किसने करना है? ये फैसला पार्लियामान नहीं करना है ना हमारे केस में। तो क्यों नहीं करती पार्लियामान? किसने रोका है पार्लियामान को कि मेरे और आपके बच्चों को लड़ाई से बचाए? मैं इस रिजान दे चुका हूँ। आप देखो ना, मैंने आपको कहा ना कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की होती तो ये सवाल की ज़रूरत ना पड़ती। मैं फिर आपको करूँ। देखिए सर, मेरी जान, एक मिनट पहले तो आप आउट ऑफ 10 बोले हैं, लेकिन खैर है, बोले हैं, आपका हक है। सर एक मेरी अर्ज सुन ले, मेरी एक अर्ज सुन ले। आप जब से आए आपने इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान रोल आउट करना था, अभी तक वो नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सीसीपी आपका इशू नहीं है, जबकि आज की मीटिंग्स में जो ईसीसी की मीटिंग हुई है उसमें गैस प्राइस, ये बात बिल्कुल रगड़ना तो सबका मकसद है, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो लोग बेनिफिट करते हैं, उनको कोई भी आप नहीं करता। क्या आप बताएंगे हमें कि आपने 2-2.5 माह में टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए क्या किसी आदमी को टैक्स नेट में लाए हैं आप, या कोई ऐसे फिगर्स दिए हैं क्या जिसको कोई ऐसा ले आउट करेंगे कि आपने बड़ा काफी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान रोल आउट करेंगे? नहीं हुआ अभी तक। We are waiting for that. You should wait. We will respond this by the end of our tenure. सर शहरियार खान, सोनो न्यूज़ से। सर मेरा सर सवाल एक आम आदमी का सवाल है। सर डॉलर की कदर में कमी हो रही है, पेट्रोल की कदर में कमी हो रही है। आपने हिदायत की थी तमाम सूबों को कि इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। सर इस वक्त प्याज 110 रुपये है, आलू 110 रुपये है। सर आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, इसके लिए सर क्या फौरी इकदाम कर रहे हैं? थैंक यू। कम से कम आपको अपने कुलीग के निस्बत ये नज़र आ गया कि 2 महीनों में डॉलर नीचे आया, पेट्रोल नीचे आया। नहीं, आपको नहीं नज़र आया। आप छोड़ दें, आपका गुजर गया सवाल, आपका सवाल गुजर गया, आपका सवाल गुजर गया। अब आप बैठें। आप प्लीज़ 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 यू आर हियर वेयर यू हैव द राइट टू आस्क बट नॉट इंसल्ट। हम दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट में चलना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये शुक्र है कि ये आधा हिस्सा आपको नज़र आया कि इसका इम्पैक्ट आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीने से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ, मैं डॉलर का रेट पाकिस्तान में कभी भी नीचे नहीं आया। क्या किसी ने अप्रिशिएट किया इसको? प्लीज़। और 16 रुपए से मैंने 335 रुपए में डॉलर का सफ़र खुद विटनेस किया है। मुझे जब याद है 1984-85 में और 86 में 16 रुपए मुझे याद पड़ता है कि डॉलर शुरू हुआ, जिसका मैं विटनेस हूँ, मेरी यादाश्त में है। और 330 तक का सफ़र मैंने देखा है। मैंने इसको हमेशा आगे जाते हुए देखा है। पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आया है और बहुत ही मीनिंगफुल अंदाज में आया है। अब इसका पेट्रोल की कीमतों का ट्रांसलेट होना गरीब आवाम की, आम आदमी की ज़िंदगी में, उसका आखिर फ़ायदा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। आज हमारी 4 सूबों के साथ जब मैं गया हूँ, यहाँ से चाइना से जा रहा था, मैंने इंस्ट्रक्शंस पास की। आज हम उसका फॉलो अप 4 सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज से ले रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स को इंगेज करना था, ट्रांसपोर्टर्स से बताना था, बाकी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनको ऑब्ज़र्व करना था कि क्या इम्पैक्ट आया है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं। कहीं होर्डिंग्स के जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि सूबों के डोमेन में आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा हम जूम के साथ उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस पास्ड हैं जी। Thank you very much. बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब. I might be a little bit off track because I understand and not to offend my colleagues because महंगाई है, inflation है and बिल्कुल सही सवाल भी पूछ रहे हैं. My question is not on elections, not on domestic politics. हम अपनी महंगाई का रोना रो रहे हैं
बिल्कुल सही रो रहे हैं, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से गुजर रहे हैं. लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट पैलेस्टाइन, वहाँ जहाँ बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं. सिंस 7th of October and obviously this has been going on for decades now, आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखी हैं, सब मिनिस्टर्स की, आपकी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आपने इस इशू को रेज किया है. बट क्या प्रैक्टिकल भी कोई स्टेप्स हम लेने की पोजीशन में हैं, as in terms of humanitarian aid, food, medicine and other essential supplies? Thank you very much. एक तो आई स्पोक टू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो महमूद अब्बास साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब वगैरह ने यहाँ से इनिशिएट किया था. हमारा एक जो एड का वो था, इट इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ बीन डिस्पर्स्ड. जो रफ़ा कॉरिडोर वहाँ क्रिएट हुई है, इट हेडेड टुवर्ड्स इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी भी एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें जो हमारी जितनी भी अम्बल का कंट्रीब्यूशन है वो. इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं. निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे रहे हैं. लेकिन आप तक पहुंचाएंगे सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, जहां पर सिविलियंस के, आम शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उनके ऊपर अब फैसला सुनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि जो फैसला सुनाने वाला 5 रुकनी बेंच है वो बैठ चुका है. जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच फैसला सुना रहा है. अब सिविलियन